વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ માતાના મઢ જિલ્લા દ્વારા નાયબ કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ માતાના મઢ જિલ્લા દ્વારા નાયબ કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ માતાના મઢ જિલ્લા દ્વારા આજરોજ આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું, જેમાં 9 જૂનના જમ્મુ કાશ્મીર વૈષ્ણોદેવી કટરાથી શિવખોડી તરફ જતી બસ પર ઇસ્લામિક જિહાદી આતંકવાદીઓ દ્વારા બસ ઉપર અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કરવામાં આવી, તેમાં 10 નિર્દોષ યાત્રાળુ શહીદ થયા, હુમલા થયો તેના સંદર્ભે આવેદન આપવામાં આવ્યું, જેમાં ઉપસ્થિત માતાના મઢ જિલ્લા મંત્રી પ્રદીપભાઈ ડાયણી, જિલ્લા ઉપાધ્યક્ષ અરવિંદ જાડેજા, ધર્મપ્રસાદ અધ્યક્ષ ચેતનભાઈ રાવલ, કોઠારા પ્રખંડ મંત્રી નીરમભાઈ પોકાર, નલિયા એર પ્રમુખ ભરતભાઈ વાવસાર, કિશનભાઈ દરજી, પ્રકાશભાઈ રંગાણી, પ્રદ્યુમ્નસિંહ જાડેજા, ઉપેન્દ્રસિંહ જાડેજા અને તમામ હિન્દુ સમાજના અન્ય કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા। બ્યુરો રિપોર્ટ રમેશભાઈ ભાનુશાલી, નલિયા અબડાસા। भारत माता की जय। भरत हरिलाल भावसार, नलिया विश्व हिंदू परिषद शहर प्रमुख। 9 तारीखे जे कश्मीर में हिंदुओं यात्राओं बस जई रही थी एना पर इस्लामिक आतंकवादीओ हुमलो करता 10 जणा शहीद थई गया है। तो हूँ भारत सरकार ने विनंती करूँ छूँ कि आवा आतंकवादीओं ने वीणी वीणी भारत में साफ करे और दुनिया में खबर पड़े कि हवे भारत में पग राखवू इस्लामी आतंकवादीओ माटे भारे थई पड़शे एवी अमारी प्रार्थना है। भारत माता की जय। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद माताना मढ़ जिला मंत्री प्रदीप भीमजी डायाणी जे 9 जूनना घटना बनी जम्मू काश्मीर में इस्लामिक आतंकीओ द्वारा जे निर्दोष यात्राळुओ पर हमलो करवामां आव्यो एनामां 10 यात्राळुओ शहीद थया छे। तो आखा देश में रोष है कि अपना जे प्रधानमंत्री है एने सख्त में सख्त कार्यवाही करवामां आवे ने इस्लामिक आतंकवादी खत्म करवामां आवे। जय जय श्री राम। जय। भरत हरिलाल भावसार, नलिया विश्व हिंदू परिषद शहर प्रमुख। 9 तारीखे जे कश्मीर में हिंदुओं यात्राओं बस जई रही थी एना पर इस्लामिक आतंकवादीओ हुमलो करता 10 जणा शहीद थई गया है। तो हूँ भारत सरकार ने विनंती करूँ छूँ कि आवा आतंकवादीओं ने वीणी वीणी भारत में साफ करे और दुनिया में खबर पड़े कि हवे भारत में पग राखवू इस्लामी आतंकवादीओ माटे भारे थई पड़शे एवी अमारी प्रार्थना है। भारत माता की जय। श्री राम। विश्व हिंदू परिषद माताना मढ़ जिला मंत्री प्रदीप भीमजी डायाणी जे 9 जूनना घटना बनी जम्मू काश्मीर में इस्लामिक आतंकीओ द्वारा जे निर्दोष यात्राओं पर हमलो करवामां आव्यो एनामां 10 यात्राळुओ शहीद थया छे। तो आखा देश में रोष है कि अपना जे प्रधानमंत्री है एने सख्त में सख्त कार्यवाही करवामां आवे ने इस्लामिक आतंकवादी खत्म करवामां आवे। जय जय श्री राम।